गुजरात के राजकोट में अश्लीलता की हदें पार करने और मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। राजकोट की कर्णावती इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाली 4 वर्ष की छात्रा के साथ शिक्षिका द्वारा कथित तौर पर अश्लील हरकत और शारीरिक चोट पहुंचाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पोस्को एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बच्ची इस समय अस्पताल में उपचाराधीन है। राजकोट के प्रद्युमन नगर पुलिस स्टेशन में बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर शिक्षिका मीतल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि शिक्षिका ने पेन या उंगली से बच्ची के गुप्तांग में चोट पहुंचाई। बच्ची की तबीयत बिगड़ने के बाद जब डॉक्टरों ने जांच की तो मामला उजागर हुआ। 14 तारीखे पेरेंट्स हमारी પાસે સ્કૂલમાં આવ્યા હતા અને એવી રજૂઆત કરી કે બાળક બીમાર હોવાથી અમૃતા હોસ્પિટલની અંદર અમે લઈ ગયા। તો અમૃતા હોસ્પિટલનો રિપોર્ટ આવેલો કે ભાઈ ઉનાળામાં બાળક પાણી ઓછું પીવે છે તો એને યુરિન ઇન્ફેક્શન છે। પણ તેમ છતાંય પેરેન્ટ્સનો એવો આગ્રહ હતો કે ભાઈ તમે 11 તારીખની સીસીટીવી બતાવો। તો અમે બાળક જ્યારથી એન્ટર થાય છે અને બહાર નીકળે ત્યાં સુધીના તમામ સીસીટીવી પેરેન્ટ્સને બતાવેલા અને એમાં ક્યાંય પણ બાળકને શારીરિક ઈજા કરતા નથી એવું માલુમ પડે એટલે આ આક્ષેપ સદંતર પાયામાં છે।